हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा मैथ्स डिस्कसिंग क्लास 9 मैथमेटिक्स chapter 6 lines and angles, and in this chapter I am discussing with you the very important keywords and definitions. This is very important, and this is part A, that is for class 9 mathematics chapter 6 lines and angles 2022-23. So here are first the point. We start with the point. A point is that which has no component, means a point has no length, a point has no breadth, the point has no height, no area, no volume. पॉइंट का न लेंथ होता है, न ब्रेड्थ होता है, न हाइट होता है, न एरिया होता है, ना वॉल्यूम होता है. इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी डॉट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. इसको कहेंगे हम लेट दिस इज पॉइंट ए. लेट आई एम राइटिंग हियर, वी कैन राइट पॉइंट बी. ये जो लेटर होता है ये कैपिटल लेटर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. Then we come to line. Line क्या होता है? When we join two distinct point, distinct mean different point. जब हम दो different point को join करते हैं, distinct mean different points, then we get a line. देखिए A और B two different point है, two distinct point है, दो अलग अलग point है. जैसे ही हम इनको join करेंगे तो एक straight line बनती है. इनके एंड पॉइंट्स नहीं होते, मींस आप इसको इस तरफ बी की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और बी से ए की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. मींस वी इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली. मींस यू कैन प्रोड्यूस राइट हैंड साइड, यू कैन प्रोड्यूस लेफ्ट हैंड साइड. इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप इसको एक सिंगल लेटर से करें, तो स्मॉल लेटर से करें, तो वी कैन राइट दिस इज लाइन एल नंबर 1. अगर आप इसमें 2 लेटर्स लेना चाहते हैं तो आप जैसे इसमें लिखिए लाइन ए बी. लेट हियर इज द थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट हो गए तो आप इसको लाइन, यू कैन से लाइन ए बी, यू कैन से लाइन बी सी, यू कैन से लाइन ए सी. आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें ले सकते हैं, लेकिन ये लाइन पूरा लाइन का लाइन यही रिप्रेजेंट करेंगे. द लाइन इज ए सी और बी सी और ए बी, क्योंकि लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 लेटर्स के नहीं केवल 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट हम करते हैं. सो ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन. इट्स लेंथ इज नॉट फिक्स्ड. इसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है. नाउ लाइन सेगमेंट. इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स. मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है और इसमें से एक आप पार्ट कट कर लीजिए सी और डी. तो ये सी से लेके डी तक का ये जो पोर्शन है, that is what? That is line segment. So it is the part of the line which has 2 endpoints. One endpoint is C, other endpoint is D. One endpoint is C and other endpoint is D. एक लाइन सेगमेंट के 2 endpoints होते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है आपका CB, राइट. एक लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है. Then ray. A ray is also a part of a line which has only one endpoint and has no end on the other side. You take a fixed point here and you produce the side. ये आप इसका फिक्स पॉइंट हुआ, तो ये रे है आपकी यहाँ O से लेके और A तक है, तो आप इसको लिखेंगे रे OA. आप इसका रे का सिंबल भी इस पे बना सकते हैं. So what is a ray? A ray is a part of a line which has one endpoint and can be extended in the other side. And now collinear and non-collinear points. Student, if you take a 3 or more points, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट आप लीजिएगा. आपने ये लाइन लिया, this point is A, this point is B, this point is C. अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. अब आप लीजिए वन पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R. इनको ज्वाइन करें, ये
तीनों पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर ये नॉन कोलिनियर है, मींस नॉट लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, बट पॉइंट ए बी सी आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। टू पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, देखिए यू कैन टेक एक्स एंड वाई, वहां से तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगा ही होगा, लेकिन कोलिनियर के लिए मिनिमम आपको चाहिए, कितने चाहिए आपको मिनिमम, वी नीड मिनिमम 3 or more points lying on the same straight line are known as collinear points, and the points that don't lie on the same line are known as non-collinear points. Here you can say A, B, C, D are lying on the same straight line, so these are collinear points. A, B, C are also lying on the same straight line, so called collinear point. But here see, when you join A to C, C to D, A to B and B to D or A to C, यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, दैट इज वाई पॉइंट A, C, D, B are non-collinear point. Non-collinear points means not lying on the same straight line. These points also D, E, F, you join D to A, A to F and D to F, कोई भी तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, that is why these are also non-collinear points. Now angles, when two rays begin from the same end point, then they form an angle. Later this is एक end point है, यहाँ से दो एक रे इधर जाती है और इसी पॉइंट से एक रे इधर जाती है, तो ये क्या बनाती हैं, they form an angle, that is an angle. The amount of rotation is set here of the is said to be the angle. यहाँ पे एंगल हुआ, और ये जो एंड पॉइंट है ये वाला वी, ये इसको कहेंगे हम वर्टेक्स. सी हियर, one ray is OA starting from point A, other ray is OB starting from the same point O. So point O is the end point and this point is said to be the vertex. And this ray RA, that is arm. एक एंगल की दो आर्म होती हैं, one is this and other arm is this, and this point O is vertex. देखिए ये भी आपके पास एक एंगल है, this arm and that is the vertex. एंड टेबल जब आपका चेयर लगाएंगे तो चेयर पर देखिए ये भी एंगल है, that is 90 degree, this arm and this is the vertex. This angle is again 90 degree, this arm, this is vertex, this angle is again 90 degree. An angle has one vertex and two arms. This angle is also having one vertex here and two arms here, means two sides, means two rays starting from the same point. And later you are observing from here, so that is an angle because this is an arm, this is an arm, this is also an angle because this is an arm, this is an arm, and this is vertex. This is also an angle because this is vertex, this arm and this arm. So here again you can say for this angle, this is the common vertex, O is O. To the vertex here, let this point is P and this point is Q. So angle POQ, you can write here angle POQ. This is having a common vertex, दोनों का same vertex O है और इसकी दो आर्म है, one is OQ and other is OP. And now let angle ABC is given. These 2 points X and Y lying inside means interior of the triangle angle ABC. तो ये जो point है जो दोनों आर्म के अंदर की तरफ है, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द पॉइंट, मींस अंदर की तरफ, सॉरी इंटीरियर ऑफ अ एंगल ABC XY. ये जो आर्म्स के बाहर की तरफ है Q एंड P, ये पॉइंट्स होते हैं P एंड Q आर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल ABC. लेकिन ये जो इनकी आर्म्स पे है एंगल AZC, यू कैन से दे आर लाइंग ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल. ये इनकी आर्म्स पे लाई करते हैं. तो देखिए ये XY इंटीरियर, Q and P exterior and AZC are on the angle ABC.
Next, types of angle you already have done in your 8th class or 7th class. See here. First is acute angle. An angle which is between 0 degree and 90 degree, वो एंगल जिनका मेजरमेंट 0 से बड़ा और 90 से कम होता है, मींस ग्रेटर देन 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. This angle AOB is 40 degree. This 40 degree is greater than 0 degree and less than 90 degree. That is why angle AOB is an acute angle. Here this angle is also an acute angle. Acute angle का मतलब ये हुआ कि वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा. The angle having is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. Then the right angle, the measurement should exactly be 90 degree. जिनका measurement exactly 90 degree होता है, ये 90 degree है, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे right angle. This angle is also right at 90 degree. So this is also a right angle. Next, obtuse angle, an angle which is between 90 degree and 180 degree. Between means greater than 90 and less than 180 degree. जो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से कम है, लेस है, ऐसे एंगल को या एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे. देखिए दिस एंगल इज 120 डिग्री, 120 डिग्री है. ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, मींस लाइंग बिटवीन 90 degree and 180 degree. So angle BOA or angle AOB is this is an obtuse angle. This is an obtuse angle because this angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. Then straight angle, an angle which is exactly equal to 180 degree. देखिए 180 degree है ये वाला एंगल, इसलिए ये एंगल 180 है, तो ये एंगल होगा स्ट्रेट एंगल, जो एक स्ट्रेट लाइन बनाए. दैट एंगल इज सेड टू बी अ स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, उस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. और ये तभी बनता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन लें और किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा, दैट विल बी 180 डिग्री. सो दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल, दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल. Then the reflex angle, an angle which is between 180 degree and 360 degree, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो, 360 डिग्री से लेस हो, उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. देखिए दिस एंगल इट्स मेजरमेंट इज 230 डिग्री. 230 degree is greater than 180 degree and less than 360 degree. That is why 230 degree is an reflex angle. इसको दूसरी तरफ देखिए. The complete angle is, this angle is 130 degree because the total is 360 degree. तो देखिए ये 130 डिग्री है, ये हमारा हो गया obtuse angle. The angle greater than 90 and less than 180 is obtuse angle. और ये जो एंगल है ये हमारा हो गया reflex angle. This angle is a reflex angle because its measurement is more than 180 degree but less than 360 degree. Then complete angle, you start करिए यहाँ से, आप शुरू होइए यहाँ आकर के वापस यहाँ आ जाइए. जो complete angle बनता है, complete angle means 360 degree. This so a complete angle is exactly equal to 360 degree. Then we come to intersecting lines. जब दो लाइन पैरेलल नहीं होती है, one line is this, जब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करती है, आपस में कट करती हैं, आपस में क्रॉस करती हैं. So these two lines means line PQ and line RS are two intersecting lines. लेकिन ये यहाँ पे देखिए PQ and RS, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है. Distance is same everywhere. See, this distance is equal to this distance is equal to, कहीं भी आप इनका डिस्टेंस लेंगे वो सेम ही होगा.
इसलिए ये जो लाइन है पी क्यू एंड line PQ is parallel to RS because the distance between all these lines is same. और when we say distance means perpendicular distance इनके बीच में same होता है, तो वो lines parallel होती हैं। तो यहाँ parallel lines कभी भी intersect नहीं करती हैं, कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। That is why the line PQ and line RS are two parallel lines. Parallel lines means non-intersecting lines. Now complementary and supplementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. दो एंगल है और अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए 35 plus 55 their sum is 90 degree. That is why angle ABD, angle ABD and angle CBD are complementary of each other. Angle here, angle ABD is complementary of angle CBD and CBD is complementary of angle ABD. आपस में ये complementary होते हैं। ABD का सी दोनों का सम होना चाहिए कितना 90 डिग्री। See here, what about their sum? That is 40 plus 50. Their sum is 90 degree. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल COB and angle AOB are two complementary angles. Means complementary of each other. Complementary का मतलब है दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे के complementary angles होते हैं। They are complementary, complement of each other. Now, supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. अगर दो एंगल उनका सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC that is 140 plus 40 that is 180 degree. So we can say that angle AOC is supplementary of angle BOC and also angle BOC is supplementary of angle AOC. एक दूसरे के ये supplementary angles होते हैं, शॉर्ट में इनको supplement भी कहते हैं। In place of supplementary, sometimes we say supplement angles. See here, what is the sum of these two angles? BOC and AOC. इन दोनों का sum 135 plus 45 that is 180 degree. So angle AOB is supplement of angle COB and angle COB is supplement of angle AOB because their sum is 180 degree. Then bisector of angles. Bisect means dividing into two equal part. Bisect का मतलब है two equal part में divide कर देना। देखिए here is the angle BOA, एक ओरिजिनल एंगल है और इसको ये OC इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स एंगल BOC is equal to angle AOC means OC bisects angle AOB. Bisects means divides into two equal parts. इक्वल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे एंगल है तो टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देंगे। इट मीन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. एंगल BOC विल बी इक्वल टू एंगल AOC. Then very important here, adjacent angles. पेयर रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स की हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट का मतलब है दोनों पास वाले एंगल. लेकिन कैसे पास वाले एंगल?
दो एंगल एडजेसेंट होंगे अगर इफ if two angles have the same vertex, one arm common and non-common arm on the different side of the common arm। देखिए कोई भी दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, देखिए यहाँ पे एंगल, यू कंसीडर हियर एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी। ए इज द कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एंड दिस आर्म AD is that is common arm. This arm is common. तो दो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई? Then these two non common arms, one is AB, ये AB केवल एंगल BOD का आर्म है, और AC केवल एंगल CO मींस CAD का आर्म है। तो क्योंकि ये जो नॉन कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में है, तो ये दो एक राइट में है, डिफरेंट साइड में है मींस। तो ये जो एंगल है BAD और एंगल CAD एडजेसेंट एंगल्स हुए। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में फिर से सुनिए। Adjacent angles, two angles will be adjacent angles if they have the same vertex, means common vertex, and one arm common, and non-common arm should be on the different side of the common arm। तो non-common arm है वो common arm के एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ होंगी। तो ऐसे दो एंगल्स को, ऐसे टू एंगल्स को हम adjacent angles कहते हैं। से so for the adjacent angles they should have one common vertex, one common arm, and two non-common arms on the different side of the common arm। Now taking some examples of adjacent angles, see here, क्या ये दोनों एंगल मींस ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल एडजेसेंट है? हाँ, क्योंकि देखिए इनका एक कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है इनका ओबी। ओबी इज कॉमन आर्म, और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म है, देखिए वन दिस इज दिस नॉन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म। ये नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है, मीन सेम साइड में नहीं है, डिफरेंट साइड में। तो ये जो दोनों एंगल है वो कौन से एंगल? एंगल AOB एंड एंगल COB आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को दोनों एंगल्स फुलफिल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, है वो कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है OA एंड OB कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, या है। दैट इज व्हाई एंगल AOB एंड एंगल COB आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये दोनों एंगल, ये बताइए कि क्या कौन कौन से दोनों एंगल? देखिए एंगल, एंगल वन इज एंगल AOB एंड अदर इज एंगल AOC। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है? देखिए कॉमन वर्टेक्स इसमें ये O है, कॉमन वर्टेक्स है, यस सेम वर्टेक्स है, लेकिन ये कॉमन आर्म भी है यहाँ पे, देखिए कॉमन आर्म है यहाँ पे OE। लेकिन ये जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म को मैं एक डायरेक्शन, ये देखिए एक नॉन कॉमन आर्म हो गई यहाँ पे, ये जो ये और ये और एक ये कॉमन आर्म के एक ही तरफ है, होना चाहिए था नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म नहीं है, एक ही तरफ है, इसलिए ये दोनों एंगल्स है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। दैट इज व्हाई द टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट। Next. Are the two angles adjacent to each other? See here, one angle is angle AOB and other angle is COD। देखिए इनका एक कॉमन वर्टेक्स है O, the common vertex is O, but they don't have the common arm। बताइए इसका ये और ये आर्म है, इसका ये और ये आर्म है, इसमें कोई आर्म कॉमन नहीं है। That is why the two angles are not एडजेसेंट। ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है, कॉमन आर्म इनके पास है लेकिन
सॉरी कॉमन वर्टेक्स है लेकिन आर्म कॉमन इनमें नहीं है, दैट इज व्हाई एंगल AOB एंड एंगल COD आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. Next, here is angle AOC and other angle is DCO. यहाँ पे दोनों में कोई इसका वर्टेक्स C है, इसका वर्टेक्स O है, कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है. That is why are not adjacent एंगल्स. ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि वर्टेक्स कॉमन इनमें नहीं है. नेक्स्ट, यस, in the two angles means angle BOC and angle AOC. Yes, common vertex is O. This is the common vertex. This arm is common. Common arm is OC. And जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, the two non common arms means OB and OA. Non common arms, non common arm है OA and OC means OB are on different sides of the common arm OC. ये देखिए, ये हमारा कॉमन आर्म है OC, इसके OA नॉन कॉमन आर्म एक तरफ है, OB इसके राइट साइड है, OA इसके लेफ्ट साइड है, तो डिफरेंट साइड है. दैट इज व्हाई दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे. नेक्स्ट, सी हियर, यहाँ पे ये एंगल 1 इज एंगल BCB, अदर एंगल इज ABC. इसका वर्टेक्स B है, इसका वर्टेक्स C है. यहाँ पे कोई कॉमन वर्टेक्स या सेम वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये एंगल्स कैसी हैं? ये जो दो एंगल्स है वो है नॉट एडजेसेंट angle. These angles are not adjacent. In this case, yes, one angle is angle AOB and other is angle COB. They have the same vertex, common vertex O. They have common vertex O, yes. They have common arm. OB is common arm. OB is common arm. Yes, they have common arm or common side OB, and the non-common arms means OA and OC on the different side of the means दोनों तरफ है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है. ये है हमारा नॉन कॉमन आर्म. दैट इज ऑल्सो नॉन common arm. So non-common arms are on the different side of the common arm. That is why the two angles are adjacent angles. And what about this? One angle is COB, angle COB, and angle COA. This angle is COB and this angle is COB. That is common vertex is O. Yes, that OC is the common arm. Here you will see ये जो common arm है ये OC common arm है, that is OC. लेकिन ये जो non common arms हैं वो एक ही तरफ है, that is non common arm. OA is non common arm. So non-common arms are on the same side of the common arm OC. That is why the two angles are not adjacent angles. And what about these angles? Yes,
angle ROQ and angle POQ. देखिए ये common vertex O, ये common arm OQ and the known common arm OP and OR on the different side of the common arm OQ. That is why the two angles are, these are adjacent angles. In this case, yes, you can say one angle is this angle BOC and angle AOC. O is the common vertex, OC is the common arm, and OA and OB known common arms are on the different side of the common arm. ये common arm OC है, तो known common arm OA और OB common arm की different side है, यानी दोनों तरफ है. तो that is why ये adjacent angles की definition fulfill करे. That is why these are, yes, these two angles are adjacent angles in this case. And now linear pair of angles. That is very important for this chapter and for the next exercise, means the first exercise, that is exercise 6.1. ये linear pair of angles क्या होते हैं? देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए ये कोई भी हमारा दो एक एडजेसेंट एंगल है AOB एंड AOC. इसमें जो OA और OC नॉन कॉमन आर्म अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए OAB एंड C, देखिए OA एंड OB, नाउ एंगल AOB एंड एंगल BOC आर टू एडजेसेंट एंगल्स है. अगर एडजेसेंट एंगल्स में एक कंडीशन और हो जाए कि जो नॉन कॉमन आर्म है OA और OC ये टू अपोजिट रेज बन जाए, या यूं कहें CA एक लाइन बन जाए, तो एंगल AOB और एंगल BOC को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तो होते ही हैं, लेकिन इनमें एक और स्पेशलिटी ये होती है कि द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म टू स्ट्रेट लाइन और फॉर्म टू अपोजिट रेज. मीन्स अपोजिट रेज कौन कौन सी है? अपोजिट रेज OA एंड OC. दो अपोजिट रेज जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? ए स्ट्रेट लाइन. सो CA इज अ स्ट्रेट लाइन. सो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स. देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है. Form a linear pair of if their known common arm form a straight line. Means देखिए angle AOB and angle here, angle AOB and angle COB are adjacent angles, and their non-common arm OC and OB forming a straight line. देखिए OA and OC, they are forming a straight line. That is why the two angles are linear pair of angles. Yes, OA and OB, these are two opposite rays or a straight line. That is why angle AOB and angle AOC are linear pair of angles. See here, OA and OC, these are opposite rays or a straight line. तो देखिए, they have a common vertex O, common arm that is OB, yes, and known common arms OA and OC are known common arms. Therefore, angle AOB and angle COB are linear pair of angles.
वो एडजेसेंट एंगल्स फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर इनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और टू अपोजिट रेज हो जाएं। टू अपोजिट रेज मींस अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये जो दो एंगल है ये लीनियर पेयर तो है, लेकिन इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ए ओ और बी ओ ओ बी वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाती है, तो हम कहेंगे ये लीनियर पेयर नहीं है। These are not forming linear pair of angles. Next, yes, because OA and OC, they are forming, these are non-common arms of angle AOB and angle COB. देखिए one common vertex है वो, OB is common arm, O is common vertex of angle AOB and angle COB, means angle AOB and angle COB. ये OB is common arm and non-common arm means OA and OC forming a straight line. That is why these are forming a linear pair. Next, yes. In the two means angles, angle B or C means this angle and angle AOC देखिए ये one vertex common है, one arm भी common है इनमें और two non common arms are on the different side of the common arm, तो दोनों angles adjacent angles हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर में होने के लिए ओ ए नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पे ओ बी और ओ ए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कहेंगे दीज आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है बट लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स नहीं है। इन दिस यू सी OB and OA forming two straight line. This is means common vertex. So in angle AOC and angle BOC, O is the common vertex. OC means that is common arm, and the non-common arm OA and OB forming a straight line. That is why these two angles are means angle AOB, AOC and angle BOC ये linear pair of angles बना रहे हैं। What about this? No, because OC and this OC and OA are not a straight line forming, so the two angles are not. Therefore, angle AOB and angle COB are not forming linear pair of angles. Next example, yes, you see here angle means ROQ, angle ROQ and angle POQ. One vertex is common, this OQ is common arm, but non-common arms OP and O are not forming a straight line. That is why they are not forming a linear pair. And now vertically opposite angles. If two lines intersect each other at a point, then the opposite angles are vertically opposite angles. जब दो lines हो, दो straight line आप बनाइए, one line is this and other line is this. ये चार एंगल बनाते हैं। देखिए, this line is A, B, this is C and this is B. One angle, angle number 2, angle number 3, angle number 4. So angle number 1 and angle number 3, these are vertical opposite angles. Angle number 2 and angle number 4 are
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइंस टू स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर्स एक्सियम, very important. And the whole exercise is depending on linear pair of axiom. If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles thus formed by the ray is 180 degree. देखिए, कोई भी आपके पास ये एक लाइन है और उस पे कोई भी एक रे स्टैंड करती है, दिस इज रे। तो इससे करने से दो आपके पास एंगल्स बनेंगे। Let this is MOP, one angle is and this point is an MON and other is MON। ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। फिर से इसको देखिएगा, if a ray stand on a line, here NO is ray and here NO is ray and MP is a line, then जैसे ये स्टैंड करेगी तो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। सो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angles thus formed by the ray will be 180 degree or supplementary angles. And so the sum of the two adjacent angles should be 180 degree. Then इसका दो देखिए, दो स्टेटमेंट है लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स के। if the sum of two adjacent angles is 180 degree, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो लाइन है, ये जो दो adjacent angles है, let this angle is 60 degree and this angle is 120 degree, that is A, O, B and C. Angle AOB and angle COB, their sum is, that is 180 degree. Then their known common arms OC and OA will form a straight line. देखिए, अगर दो बातें हुई, अगर ये स्टैंड करता है तो दोनों एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और अगर दोनों दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इनका नॉन कॉमन आर्म होंगी, they will form a straight line. फिर से पढ़िए, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then their non-common arms will form a straight line. So ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में है, एक्सियम 6.1। एक्सियम्स का मतलब बेसिक फैक्ट टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, इसको बिना प्रूफ के ही हम मान लेते हैं, जिसकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम एक्सियम कहते हैं। तो दो एक्सियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। If a ray stands on the line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. And the second statement of the same axiom means linear pair axiom. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. Here, non-common arm एक straight line बनाती है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट है, the two axioms about together is called the linear pair axiom. And now vertically opposite angles, हमने आपसे डिस्कस किया कि जब दो लाइन लेट AC and BD इंटरसेक्ट करती है तो चार एंगल्स हमारे पास बनते हैं। एंगल नंबर 1, this angle number is 1, this angle number is 2, this angle number is 3 and this angle number is 4. Angle 1 is equal to angle 3 and angle number 2 is equal to number 4. ये vertically opposite angles होते हैं और इनका मेजरमेंट हमेशा ही इक्वल होता है। तो आपके सिलेबस में इसका प्रूफ भी है कि प्रूव दैट if two lines intersect each other, then prove that the vertically opposite angles are equal. So first देखिए, हमें गिवन में लिखना पड़ेगा two lines AB and CD, they intersect at point O. So given lines AB and CD, they intersect at point O. Then to prove क्या करना है,
we have to prove that angle AOC is equal to angle BOD because these are vertically opposite angles. Listen, एंगल AOC को हमें प्रूव करना है एंगल BOD के इक्वल है एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, पहले हम इसमें लेते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए वी आर टेकिंग दिस एज अ लाइन, this CD is a line and ray AO stands on it. Ray AO stands on the straight line CD. That is why by linear pair of axiom, angle AOC plus angle AOD will be 180 degree. देखिए ना, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed will be 180 degree. That is why we can say here a ray AO stands on the line CD. That is why angle AOC means angle AOC plus angle AOD is 180 degree. The reason is by linear pair axiom. Further, AB is a straight line and ray DO stands on it. देखिए ये रे DO है, वो straight line AB पे stand करती है. So again, by linear pair axiom, angle AOD plus angle BOD, angle AOD plus angle BOD will be 180 degree. Means this angle is AOD, this angle is BOD. इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देखिए, so now you can say, अभी दोनों का सम 180 डिग्री है। देखिए, this is 180 degree, this is also 180 degree. It means angle AOC plus angle AOD is equal to angle AOD plus angle BOD. इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, because right hand side is 180 degree, so right hand side is equal, then left hand side will also be equal. Angle AOC plus angle AOD, angle AOC plus angle AOD, that is equal to angle AOD plus angle BOD, angle AOD plus angle BOD. Now angle AOD and AOD angle cancel, same है, that is why angle AOC is equal to angle BOD. So angle AOC is equal to angle BOD. यही हमें प्रूव करना था। देखिए, this angle AOC is equal to angle BOD. और सिमिलरली करके जब प्रोसेस सेम होता है तो हमें इसको प्रूव अगेन से नहीं करना पड़ता। सो वी कैन सिमिलरली this angle AOD is equal to angle BOC. We can prove that angle BOC, similarly angle BOC is equal to angle AOD. And that's all. So thank you. इस क्लास में बस इतना ही। Thank you. Thanks a lot for watching.